we'll be learning one of the most important concepts. Okay, so we have been through few frameworks, right? Like, I'll write it in a board. We have learned pivots, we have learned Camarilla pivots, and also we have covered Hancock. Hancock, also called session profile, session volume profile. Also, it has many names: volume profile, session volume profile. So basically, अभी तक हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीख ली हैं, दैट इज पिवट पॉइंट, पीओसी एंड H3L3. सो बेसिकली इतना कवर करने के बाद now we learn few concepts, how to apply and how to use them. So we have also covered responsive and initiative players. I don't know whether I should be speaking fast or should I keep it on a slow pace. So just comment करके बता देना if there is anything जो कि समझ नहीं आया, तो I try to cover it because I have seen my responsive and initiative player वाला वीडियो and I think अभी भी उसमें मैंने अच्छे से कवर नहीं किया है. So basically इस वीडियो में हम सीखेंगे IB. IB का मतलब होता है इनिशियल बैलेंस. इनिशियल बैलेंस क्या होता है? इनिशियल बैलेंस बनता है गाइस साथ साथ में. इट डेवलप्स ओवर टाइम, लाइव. इसको लाइव ही देख सकते हैं. देयर इज नो अदर टूल टू सी इट. सो बेसिकली इनिशियल बैलेंस होता है फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर द ओपनिंग. सो हाउ टू notice it, initial balance and why it is important. So basically जो initial balance है ये टाइम के साथ साथ बनता है और फर्स्ट 1 घंटे की हाई और लो को इनिशियल बैलेंस कहते हैं. मतलब सपोज सीपीआर के रिस्पेक्ट में देखें या फिर वट एवर कैमरीला और एनी पिवट्स लाइक ओके. सो हियर इज द ओपन टिक एंड 1 घंटे के अंदर इट कैन गो एनीवेयर, राइट? इट मूव सो रैंडमली सो फास्ट. सो जो फर्स्ट 1 आवर जहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब 5 5 मिनट की कितनी कैंडल? 12 कैंडल्स. 15 15 मिनट्स की कितनी कैंडल? 4 कैंडल. और 30 30 मिनट की 2 कैंडल. ऐसे देख सकते हो. या 1 1 मिनट की 60 कैंडल, 2 2 मिनट की 30 कैंडल, 3 3 मिनट की 10 कैंडल. जैसे भी. अब मैं थोड़ा सा चार्ट में एग्जांपल लेके समझाता हूँ. सो ये जो ये कितने कितने 15 मिनट की है. सो बेसिकली इनिशियल बैलेंस 1 2 3 4. ये हाई और ये लो. देखो इसको कैसे देखते हैं, इंडिकेटर भी है इसका बट इट्स नॉट दैट गुड. सी यहाँ से इनिशियल बैलेंस ऑन कर सकते हैं एंड ये 9:15 से करता हूँ मेरे को. 9:15 से 10:15 ये ऑन कर सकते हैं. देखो ये हो गया इनिशियल बैलेंस ऑन. सो इनिशियल बैलेंस कैसे देखते हैं कि जो फर्स्ट 1 घंटे का हाई है ये वाला हाई था और 1 घंटे का लो ये है. सो इनिशियल बैलेंस 5 मिनट में देख सकते हैं. 15 ऐसे देखेगा. देखो इसका यहाँ तक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आगे चल के, पर समझो कि दिस वाज द हाई ऑफ फर्स्ट आवर. ओके, यहीं कहीं फर्स्ट आवर खत्म हो गया होगा. देखो
गिन लेते हैं ना 12 कैंडल, 1 2 3 4, 10 15 पे आ जाओ सीधे, ये 10 15 और ये हाई, ये इनिशियल बैलेंस हाई इस कैंडल में ख़त्म हो गया। ठीक है, पिछले दिन का देखने के लिए भी यू कैन काउंट 12 कैंडल्स, इसके पीछे का भी यू कैन काउंट 12 कैंडल्स। फॉर 5 मिनट कैंडल कितनी, 12, क्योंकि सिर्फ हमें 1 घंटे का पीरियड नोटिस करना है। सो लाइक 1 घंटे के पीरियड में हाउ मच एक्टिविटी हैज हैपेंड, दैट इज कॉल्ड इनिशियल बैलेंस। And why initial balance becomes so important? Because now I'm going to explain you the 6 types of days with respect to initial balance. So there is no seventh day. We have been discussing this, right? So that was with respect to maths, like math of every framework. Like six CPR can have 6 types of days. Okay, Camarilla can have 6 types of days. Even Hancock can have 6 types of relations. So we have like already covered this कि maths के हिसाब से how 2 day relation can happen only in 6 ways. Okay, so now we'll be learning initial balance. Initial balance. So basically जो first 60 minutes from open जो पीरियड होता है उसको इनिशियल बैलेंस कहते हैं। इसमें दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट 60 मिनट के लिए इसको कहते हैं आई बी हाई, इसको कहते हैं आई बी लो। सिंपल, इसका मतलब हुआ इनिशियल बैलेंस हाई, हाई इनिशियल बैलेंस लो। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सिंपल सी बात है कि लाइक प्राइस को देख के हम टाइप्स ऑफ डेज कैटेगराइज कर रहे हैं इनिशियल बैलेंस की रिस्पेक्ट में। जैसे हमने CPRs की रिस्पेक्ट में किया, व्हाट इज बुलिश, बायस, रिजेक्शन एंड एवरीथिंग। सो only 6 types of days can happen with respect to initial balance. So what they are? Okay, first let's consider a trend day. Trend day में what will happen? The initial balance low will be the lowest point of the day, and उसके ऊपर ही क्लोजिंग होगी। और इनिशियल बैलेंस हाई इज द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में फुल मूव हुआ है, ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो कि ओपन से ट्रेंड केस क्या होगा। बेसिकली ट्रेंड केस ये होगा ना कि जहाँ भी ओपन हुआ उससे एक ही डायरेक्शन में चला। सो इनिशियल बैलेंस की रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ट्रेंड डे में व्हाट हैपेंस, इनिशियल बैलेंस हाई गेट्स ब्रेकन, मतलब ब्रोकन, कि इनिशियल बैलेंस हाई न्यू हाई हर टाइम फ्रेम पे इनिशियल बैलेंस हाई आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सी इट ओपन्स हियर एंड ये 60 मिनट है कि यहाँ पे 60 मिनट खत्म हो जाएंगे। सो ओपन 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 एंड इनिशियल बैलेंस हाई जो भी बन रहा है उसके ऊपर ही जाते जाएगा। सिंपल सा मतलब है, ये ड्राइंग से मैंने समझा है कि या तो इनिशियल बैलेंस हाई आई बी एच और आई बी लो will be the top or the dip
of that day. मतलब it can be the highest point initial balance high कि नीचे नीचे आया अगर तो, और it could be the lowest point in trend days. So basically ट्रेंड डे को कैसे कैटेगराइज करना हमने समझ लिया इनिशियल बैलेंस हाई से, कि इनिशियल बैलेंस हाई मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो इनिशियल बैलेंस हाई के ऊपर ही होगा. ओके, सो दैट इज द ट्रेंड डे फर्स्ट केस. And second is double distribution. This one is important. डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे, इसमें क्या होता है कि इनिशियल बैलेंस, ये मान लो फर्स्ट 60 मिनट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 60 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक में जो भी इनिशियल बैलेंस बना, कैसे भी बन सकता है, ऐसा बन गया कैसे, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट जस्ट की इट बी टू प्राइसेस, दिस बी आई बी एच, आई बी एल, कैसा भी बना. जब रिजेक्शन इनिशियल बैलेंस हाई पे आफ्टर 60 मिनट्स के बाद हाई लो कहीं पे भी जाके इट गेट्स रिजेक्टेड, सो मीन्स की प्राइसेस हैव टू टू डिस्ट्रीब्यूशंस, ऐसे कुछ. या फिर इट कैन बी एनी एनीवेयर, या ऐसे फिर सेम ही बन गया. बट सो बेसिकली व्हेन द प्राइसेस हैव टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनिशियल बैलेंस हाई या लो तक आया और फिर लो से हाई तक गया है, फिर whatever है ना, कि price turned from the initial balance. That happens in most of the days. I'll show you. So see, this is the trend day, because what happened, initial balance high got broken and it continued. L3 पे dip किया. See, people wait for initial balance to get formed. Then initial balance बनने के बाद they see what the bias is doing. Initial balance high ही, इनिशियल बैलेंस हाई ही वो था यहाँ पे दिन का हाई. दैट मीन्स इट्स अ ट्रेंड डे. L3 पे जैसे ही डिप किया है, ट्रेंडेड H3 तक गया. ओके, नाउ वी विल सी फ्यू different examples. No, okay, let's keep this on the chart and daily CPR भी लगा लेते हैं, so that you also see the beauty of the prices. See here what happened. It was the double distribution trend day, because initial balance low पे आया and ओपनिंग बायस वाज व्हाट, बुलिश. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि यहाँ पे ओपनिंग का मतलब क्या है, सीपीआर के ऊपर ओपनिंग का मतलब क्या है, पीओसी के ऊपर ओपनिंग का मतलब क्या है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस. सो सी, दिस इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे. सी, नाउ यू गेट इट. I guess the double distribution trend day, and I'll show you a few other examples. See, this here is the double distribution trend. See, इनिशियल बैलेंस हाई, दो बार इनिशियल बैलेंस हाई के आसपास आए. सी हियर exactly initial balance high, and also it was virgin pivot, it was in sell trend formation, open bullish. So concept change हो गया, initial balance high पे ही sell point बन गया and it closed in above layer 1, actually still bullish. Then again this was the perfect sell setup, sell CPR shifting, opening below, but the range was shifted because open high low close, so this is developing its value. So here we go. And also see, what is it, what was it, this is also same double distribution. पहले घंटे का लो ही लो पॉइंट था. this this was a typical day turning into trend day. We'll discuss this day इसको क्या कहते हैं. So basically we should just move on to the video. So basically we have covered two types of days जिसमें दो बार रिजेक्शन करता है, दैट इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, एंड जिसमें हर 30 मिनट या हर एक घंटे में हायर हाइज ही फॉर्म होते हैं. देर इज नो मतलब कोई भी इनिशियल बैलेंस
फिर से रिपीट नहीं होता इनिशियल बैलेंस वाला प्राइस, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड डे. एंड देन द थर्ड डे इज द टिपिकल डे. टिपिकल डे मीन्स इज a no trade day. ठीक है, दिस इज द बेस्ट ट्रेड डे. This is the averaging average trade day, and this is the no trade day. What happens in here? A very wide initial balance get formed. पूरे दिन की ट्रेडिंग फर्स्ट पहले ही घंटे में होके ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ वाइड डे. अगर तुमने देखा कि एक घंटे में ही इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट है 1-2% का, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग, because typically it will turn out to be the typical day. See, I'll show you few examples of the typical day. इसमें बहुत ही, see, this is a trend day. Initial balance high and S1 was the selling point. वहाँ से नीचे ही नीचे आया, then initial balance low को भी तोड़ के, see, this was the trend day, this was the trend day, ये भी पूरा trend day है. Opened at lowest point, closing almost at the highest point. Okay, this is what this is the इसको, ये कौन सा दिन है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा दिन है, क्या लगता है ये कौन सा दिन है. दिस इज़ द ट्रेंड डे. एंड ऑल्सो दिस इज़ द एग्जाम्पल वी आर लुकिंग फॉर. ऐसे आँख से देखना पॉसिबल नहीं है, बट सी, एक घंटे में ही पूरी ट्रेडिंग ओवर हो गई. एंड देन व्हाट हैपेंड, closed exactly almost at the same price. This is the typical day example of a typical day जिसमें फर्स्ट आवर में ही पूरी एक्टिविटी होके ख़त्म हो गई. So that is the typical day. See, there are many examples to typical day. See, these are the trend days, because every day, see, this is the good trend day. Slow हुआ, but it was a trend day. See, this was the double distribution trend day. Initial balance low, and then initial balance high के ऊपर close हुआ. Two distributions have formed. Here also, see, two distributions have formed. So अंतर तो समझ में आ गया होगा. This is the trend day, this is the double distribution trend day, this is the trend day, and this is what, this is nothing, this is but consolidation. एक घंटे में initial balance high and low, and then this is nothing, guys. You should be ignoring these days, because it was a cell formation. We can see सेल था, ऊपर नीचे यहाँ से आया, एक ही बार में S1 15. दिस इज सो फास्ट गाइस, इसीलिए इसको नोटिस. सी, 3 minutes and it was over. Most of the retail traders, they react late, they do not understand the concept of initial balance and everything. See, what is it, guys? If you would have known this thing, ये इतना वाइड इनिशियल बैलेंस बनते ही समझना था कि दिस वाज अ टिपिकल डे. Typical day when you should not be trading. See, again, initial balance low, say became double distribution day. So what happened? Hello, I don't know, मेरी आवाज़ कब चली गई थी. So let's learn again. Basically, typical day we have covered. We have covered double distribution, trend day and trend day. So basically क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग है.
दिन के एंड में पता लगता है कि दिन कौन सा था, साथ साथ में डेवलप होता है, बिकॉज इनिशियल बैलेंस डेवलप्स साथ साथ में कि 1 घंटे का हाई कहाँ होगा, 1 घंटे का लो कहाँ होगा, देन उसके हिसाब से क्लोजिंग्स कहाँ हो रही हैं, ओपनिंग कहाँ हो रही हैं। सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ डेज। ओके, इसके अलावा जो बच रहा है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट बुक में 6 टाइप्स ऑफ डेज बताया है। ट्रेंड डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, टिपिकल ट्रेंड डे और एक्सट्रीम ट्रेंड डेज। ओके, सो बेसिकली ये तीन ही बातें है ना, इसको किसी भी तरीके से बोलते हो, एक्सट्रीम ट्रेंड डेज, ओके, देन ट्रेंड डेज, देन डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डेज, देन टिपिकल डे, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। वेट, let me just check out 1 second. Name out all the types of days uh, told, like discussed in the book Secrets of Vivid Was, which were trend days, double distribution trend day, typical day. Tell me all the names of 6 types of days. Just give me a minute, guys. I know it sucks while you're studying and you just have to wait. So trend days, double distribution trend days, expanded typical day, trading range day and sideways day. So okay, it's basically nothing, guys. मतलब और ही complicated बनाया है book में तो. So basically there are 3 types of days: trend days, double distribution and typical days. क्योंकि इनकी continuation open high low close के हिसाब से sideways भी हो सकती है, कि initial balance लो और हाई के बीच में ही बंद हो गया, कि इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो। बहुत ही ज़्यादा नीचे कर दिया है मैंने कैमरा। सो देख लेते हैं एक बार, लेट्स कवर इट प्रोफेशनली once once and for all. I mean, this is the most helpful concepts, because an initial balance high is broken, that means the trend is continuing, that means the initiative players are there. अब वो बाय साइड भी हो सकते हैं, सेल साइड भी हो सकते हैं, और इनिशियल बैलेंस लो की भी बात करेंगे यहाँ तो। जब भी इनिशियल बैलेंस किसी भी साइड को शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स द इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग इन द मार्केट्स। ओके, सो दे, what initiative participants do, they push the price towards the buyers until the responsive players enters and shifts the price towards mean. So basically what happens when initial balance high is getting broken, that means the initiative bias is for bullish. If the initiative, wait, ये सब ध्यान से समझना है तो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे गाइस। इफ bull bias formed, if bull bias formed and initial balance high के ऊपर जा रहा है, initiative balance high is less than any tick, okay, of any period, initial balance high के ऊपर, if it's exceeding, that means if the bias is bull bias, that means initiative initiative players are active, and what they will do, they will support the trend, simple. Okay, if tick is getting rejection from initial balance high, okay, like initial balance high को touch किया and some wick formed,
सो ओके, इनिशियल बैलेंस फर्स्ट 60 मिनट के बाद ही देखते हैं. गेटिंग रिजेक्टेड, दैट मीन्स व्हाट? रिस्पॉन्सिव sellers are interested at that price. Initial balance high पे responsive seller for bull case if it is getting rejected from initial. So initial balance के concept से हम और अच्छे से nature of players को समझ सकते हैं कि when which player enters, when responsive player is entering, when initiative player is entering. So basically hack ये है, hack समझते हैं अपन. हैक ये है कि जो फर्स्ट 60 मिनट्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, उसका हाई लो नोटिस करना है. अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, फर्स्ट फर्स्ट 1 आवर का गैप, तो डू नॉट ट्रेड. सिंपल सी बात है. ऑल्सो डू नॉट ट्रेड अबव और बिलो R1 और S1. Why? We have already covered. The probability does not favors us. The best prices are already over for the trend. So these were the few concepts. So basically try to notice the initial balance, then you will understand whether it's going to be the double distribution day, whether it's going to be the sideways day, expanded typical days. So बस इंग्लिश है अलग अलग नामों की. बस मतलब ये है कि पहले 60 मिनट में ही मशीनें काम करती हैं. मतलब कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट 60 मिनट्स में सारे क्यूबिट्स, सारे क्वांटम कंप्यूटर्स वॉटेवर, वो सब लोग मिलके एक रेंज बना देते हैं. ये लो, पहले घंटे का ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, IBH से IBL. द ऑक्शन ऑफ फर्स्ट स्टार is known as initial balance. So with respect to that auction, we can have different mathematical zones and different mathematical concepts about the price. If the initial balance high is getting broken, it is going to be the trend day. No doubt trend day. Because ये ये फर्स्ट घंटे का हाई लो इतना ज़रूरी क्यों है, ये तो बस नोटिस करने से समझ में आ सकता है. ये अगर लग रहा हो कि ऐसे कोई हवा का कंसेप्ट है, मतलब बिना बैक टेस्ट किए या बिना नोटिस किए, तो इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स मशीन लर्नड ऑब्जर्वेशन. सो बेसिकली फॉरेक्स में कितने सारे इनिशियल बैलेंस बनेंगे, कैन यू ऑब्जर्व ऑल दोज? लाइक व्हेन टोक्यो market has opened, what's the initial balance for that market? Then when the different session is opened, what's the initial balance for that? So basically there are different initial balances are made in different time frames. Because forex में कम से कम 4 बार ओपन होता है मार्केट different टाइम जोन्स में. सो दैट मैनी इनिशियल बैलेंस गेट फॉर्म्ड. और सबका 1 घंटे का स्टार्टिंग पीरियड इज द इनिशियल बैलेंस पीरियड फॉर दैट chart. So when the initial balance high is getting broken, that means price और ऊपर जा सकता है और initiative participants bias को support करने के लिए आने वाले हैं. Cause and also what happens when the initial balance low gets broken down. So then what happens कि it can be either the trend day towards the downsides or it could turn out to be the dip. So both the cases. And also go through this book called Secrets of Pivot Boss. There you will see the beauty of it. So basically initial balance की respect में there are 3-4 types of days जो कि हमने कवर कर दिया है. और इट गेट्स डेवलप थ्रू आउट, मतलब वो साथ साथ में डेवलप होता है एंड उसको साथ साथ ही देख सकते हैं. मतलब ट्रेंड डे डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में क्लोज हो सकता है और डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे में क्लोज हो सकता है. ऐसे मतलब सिंपल मैथ है जो कि समझ भी गए होगे. सो अब इसके बाद शायद हमें कंसेप्ट्स आर कवर्ड.
we should be making one video series on risk management and how do you position yourself and how to save yourself from sharks and these quantum machines. So our next series will be on risk management and everything. So this was the rough video on initial balance. So you should just go and check out the initial balances of every. I know it's lot. We are learning a lot. At the end, I'll tell you how you can do it very easily, like all the mathematical zones, pivots, and everything at one place. So subscribe for more videos like this. It's already 30 minutes, and I don't wanna go beyond 30 minutes. I can talk this for like hours, but basically concept ये है कि initiative player in और responsive player को initial balance की respect में देखना है with respect to the bias of the session. So इसके लिए इनिशिएटिव बैलेंस वाला वीडियो भी देख लो गाइस, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, वो जिसको इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिव प्लेयर नहीं पता, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस. सो that's it from my side and good luck in your journey and keep supporting and subscribing guys. We have like I have already reached that 100 hours watch time mark and I wanna soon reach to that 4000 watch time hour mark. So if your friends are interested, I know there are always friends suggesting this stock market and all, and after that everybody gets bankrupt. So it'll be a really big support if you suggest them my videos and all. And at the end of the day, I'll be sharing my PNL and my overall growth. So that's it for this video, guys. Just was initial balance and 30 minutes of me explaining initial balance. And this is the very powerful concept, and it makes complete sense for once you start to notice it. Why, what's happening, then you can be like really you can see everything, like you have the categorization for every day. That's what we are doing right now. Then we'll be learning how to make this strategy, how to define things. uh, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, like this is the disclaimer. If you are thinking कि initial balance समझ गया है and you can do it, no, you cannot do it, because this was nothing. This is just 2% of the thing which we have like already trying to cover. We have already covered like 40% of the things,